Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें न्यूक्लियस रो वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विषय रे डिस्कस करिबा व्हिच आर of three types: statistics, parity and isospin. So first है statistics. देखो क्वांटम मेकानिकली जदि आमे देखिबा गोटे सिस्टम को with a number of particles like nucleus, it is given by the Bose-Einstein or Fermi-Dirac statistic. First है Bose-Einstein. Bose-Einstein माने all the particles with integral value of spin, that means the unit of h cross or 0, they obey this Bose-Einstein statistics and are called bosons. Okay, example जदि नबा हमें ये हेगला फोटोन, पाई मेजन, देन ड्यूटेरॉन, ये सब हेला बोसोन कैटेगरी रे. All the nuclei with even mass number a रो वैल्यू जार even रहिबो, they obey this Bose-Einstein statistics. Okay, the wave function को हमें यदि देखिबा of a system which is obeying the Bose-Einstein statistics is symmetric. एटी wave function टा symmetric रहिबो, माने wave function for such a system will remain unchanged, unaltered by the interchange of all the coordinates for any pair of identical particles. माने suppose wave function टा थिला x1 x2 dot 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 xi xj and xn. Okay, this is the wave function for a system of n identical particles which are obeying the Bose-Einstein statistics. एटी xi होची coordinate. Okay, these are the coordinate. xi को हमें ith particle रो coordinate बोली कहि परिबा. ताले नुआ wave function को हमें कहि परिबा by interchange जदि कर देला coordinate i और j को, then this will be psi of x1 x2 एबे xj आगो आसिला xi परे आसिला इंटरचेंज कर देइछु. सो इन केस ऑफ Bose-Einstein statistics जदि ए wave function टा फॉलो करूची ताले एठी याकू जदि आमे psi 1 कहिबा आउ याकू आमे जदि कहिबा psi 2, then actually psi 1 he jibo equal to psi 2. So upon interchange of the coordinates I and j, or better I should say xi and xj, एठी wave function दुईटा समान ही रहिबो. Okay, wave function टा in fact change ही हेबो नाही. Okay, so the wave function of a system which is obeying Bose-Einstein statistics is said to be symmetric. Second category रे आसिला Fermi-Dirac statistics. Here all the particles with half integral value of spin माने half h cross obey the Fermi-Dirac statistics and these particles are called fermions. Example हला electron, proton and neutron. So all the nuclei having odd value of this mass number, they obey Fermi-Dirac statistics. Okay, and all the fermions obey the Pauli's exclusion principle. Okay, अच्छा एटी जदि हमें wave function देखिबा in a system which is obeying the Fermi-Dirac statistics, it is actually anti-symmetric. माने एबे जदि हमें गोटे wave function रे थिबा जे कोनोसी दुईटा coordinate को जदि change करिबा upon interchange of coordinates of any pair of identical particles, ताहले एबे कोन हबो wave function टा एबे change हे जिवो हैला, ये negative हे जिवो. Okay, so the new system will have identical with the original one, but the change of sign of the wave function will now occur. In other words, एबे देखो एठी psi रो एठी value जदि आमे नेइछु एठी याकू psi 1 जदि नेला एठी xi और xj को एठी सेकंड केस रे आमे इंटरचेंज कर दीछु, ताले एठी एटा psi 2 सहित
ये equal haba but with a negative sign. Okay, so these two wave function are now anti-symmetric in case of Fermi-Dirac statistics. Okay, ଏବେ ଦେଖିବା parity କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, one of the fundamental nuclear property is parity. According to quantum mechanics ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ wave ସବୁବେଳେ associate ହେଇକି ରହିଥାଏ ଗୋଟେ moving particle ସହିତ. A moving particle has a wave associated with it. So this wave correspond to a wave function. Suppose it is psi. Okay, this wave function depends on the coordinates x, y, z of that particle. আচ্ছা, এটি जो এই wave function টা ଆମେ পাইলা, it may be regarded as a measure of the probability of a particle around a particular position. ओके, पार्टिकलटा जो मूव करुच्ची, सो से मूव करवा अवस्था गोटे पार्टिकुलर पोजिशन रे से पार्टिकल को आम पाइबार केते चांसेस अच्छी. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या मेजर करे यही वेव फंक्शन साइ. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इज गिवन बाय द मॉड साइ स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज साइ इंटू साइ स्टार. एटी साइ स्टार हो गला द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइ. Okay, so if the particle is definitely to be found, suppose within a distance dx, then याको आमे integration रे भी express करि परिबा ए जो probability of finding this particle in this distance, small distance dx, and its value must be equal to unity. ओके, जदि आमे पूरा जानिछु जे ए distance dx रे जाले भी particle टा मिलिबो 100%, that means the probability is 1. Okay, and in general the integration from minus infinity to infinity psi star of dx, it becomes equal to 1. Okay, अच्छा, parity जो आमे देखिला, it is actually considered to be more important than nuclear spin. कहीं कि parity गोटे nucleus रो refer करे the behavior of this wave function psi under inversion of coordinates. Inversion of coordinates माने कोन? If we replace a coordinate x by minus x, similarly y by minus y and z by minus z. Okay, तारो ठीक नेगेटिव रे आमे जदि कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर देबा, then the wave function is said to possess even parity. Even parity जदि possess करछि wave function, ताले कोन होबो? Psi of xyz is equal to psi of minus x minus y minus z. किंतु at the same time जदि wave function टा odd parity possess करछि, ताले एबे psi of xyz becomes equal to minus of psi of minus x minus y and minus z. So in general आमे कहि परिबा psi of xyz is equal to p psi of minus x minus y minus z. ए p रो value plus or minus 1 हबो. ए p जो quantity आसिला, this is nothing but the parity. Okay, p can be taken as a quantum number and the property defined by it is called parity of the system. So यार value टा plus 1 हबो केतेबेले even parity रे, minus 1 हबो, this will give you odd parity. Okay, let us take the example of a system with potential energy as a symmetric function of coordinates. So এই case रे कोन हबो? Potential energy टा coordinate रो symmetric function. So in this case the symmetry of wave function is v of xyz is equal to v of minus x minus y minus z. So काहेकि एमती हला? Because the wave function is symmetric one. अच्छा, एबे जदि हमें न्यूक्लियर स्टेट को देखिबा, these are characterized by definite parity which may be different for different state of the same nucleus. समान न्यूक्लियस पई अलगा अलगा स्टेट पई अलगा अलगा parity आसीबो. However, the parity remains conserved during the nuclear transformation. ट्रांसफॉर्मेशन माने सपोज फॉर एग्जांपल गामा डीके, ए केस रे पेरिटी टा चेंज हबो नाही. अच्छा, पेरिटी गोटे न्यूक्लियस रो इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ द वैल्यू ऑफ इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल. ओके, एज ए रूल जदि ए एल रो वैल्यू टा इवन आसिला ताहले पेरिटी मध्य इवन हबो, आ एल रो वैल्यू जदि ऑड आसिला पेरिटी मध्य ऑड हबो. सपोज आमे हाइड्रोजन लाइक एटम्स नेला ताले
parity को आमे orbital quantum number L सहित relate करि परिबा by the relation p equal to -1 to the power L. Okay, so L रो value even हेले wave function टा चेंज हेबो नाही, तार साइन चेंज करिबो नाही, तेणु करी parity टा एठी even बा पॉजिटिव आसीबो. सिमिलरली L रो value जदि odd हैला ताले एबे wave function साए ये तार साइन टा चेंज करिबो सो दैट parity टा एबे नेगेटिव बा odd आसीबो. ओके, इंट्रिंसिक parity जदि आमे देखिबा इन केस ऑफ पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो एंड म्यू मेजन यार वैल्यू टा इवन आसीबो, व्हेरेज इंट्रिंसिक parity पाई मेजन रे यार वैल्यू टा ऑड आसीबो. अच्छा, जदि आमे होल सिस्टम रो parity कंसीडर करिबा इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द parities, एटा पार्टीज नुह, parities प्रिंटिंग मिस्टेक अछि, प्रोडक्ट ऑफ द parities of the individual particles. Okay, hence we can say a system having even number of odd parity particles and any number of even parity particles, it will have even parity. Okay, similarly a system having odd number of odd parity particles and any number of even parity particles, it will have odd parity. Okay, parity टा होची गोटे purely quantum mechanical concept having no classical analog. और जदि न्यूक्लियर स्टेट्स को देखिबा दीज आर कैरेक्टराइज्ड by a definite value of parity which may be different for different states of same nucleus जेमति हम ऊपर देखिला. So in a nuclear reaction parity टा conserved बा constant रहे. ओके, एबे थर्ड जो वेव मेकानिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियस रो आमे देखिबा आइसोस्पिन. देखो आमे जानिचु जे न्यूक्लियस भितरे दुईटा पार्टिकल अछि, गोटे हला न्यूट्रॉन आ गोटे हला प्रोटॉन. এই দুই পার্টিকেল को आमे न्यूक्लियन बोली कि कहू. अच्छा, এই न्यूट्रॉन आ प्रोटॉन दे आर एक्चुअली सिमिलर, ओनली डिफरेंस हला तांकर चार्ज रे. न्यूट्रॉन टा हला चार्जलेस, प्रोटॉन हला पॉजिटिवली चार्ज. सो ऑन दिस बेसिस these two particles are considered to be just different manifestation of the same inherent particle. कौन से inherent particle जेमति कहली सेटा न्यूक्लियन. Okay, so to describe this quantum state of the nucleon, a quantum number is used which is known as isotropic spin quantum number or simply isospin or T spin. Okay, so isospin quantum number is conserved in case of nuclear transformation. Suppose गोटे न्यूक्लियन अछि, आमे ताकू assign करि परिबा with a isospin equal to half, and in an electromagnetic field two charge states with isospin components, suppose plus half or minus half, they can be distinguished as proton and neutron. ताले प्रोटॉन रो आइसोस्पिन हेगला प्लस हाफ, न्यूट्रॉन रो आइसोस्पिन हेगला माइनस हाफ. ओके, सो दिस आइसोस्पिन इज एक्चुअली अ वेक्टर in three-dimensional space and it is called isospin space. Okay, it has no relation with the physical space actually. Okay, ये जो component isospin रो अछि, it will measure in terms of T3. Okay, T3 ये होची गोटे component T रो. T हेगला तमरो main जो isospin in the direction of the third axis of this isospin space. ओके, आइसोस्पिन विषय जदि आमे आकु डिटेल जदि पढ़िबा इन केस ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स एथिरे आमे आहुरी डिटेल या विषय रे आकु पढ़िबा. ओके, थैंक यू.